Well, good evening everyone. My name is Dr.Toqeer, currently working in ENT department. I hope you guys having great time. Well, nice. Because today I'm going to talk about nose bleeding. Well, last time, if you remember, I was talking about foreign body in the ear. So today my topic is it's an emergency condition. Sometime nose bleeding. Yes, in medical we call it epistaxis. That means bleeding from the nose. Well, so the most common cause of this nose bleeding is dryness, especially in the winter, and it affects you when you are at the age of 10 years old and after 50. And when you are 10 years old, so the causes behind of this nose bleeding, like a trauma, picking the nose. Well, you have tiny blood vessels inside your nose, and in winter, especially when there is so much dryness, and you try to picking your nose, and these tiny blood vessels during picking cracked, and you end up with nose bleeding. Well, there is another major cause of this nose bleeding, that is medicine, especially aspirin. When you are taking aspirin, this aspirin is interfering with blood clots, and you end up with nose bleeding. Well, there are two main and major sources of nose bleeding. One is interior nasal cavity, and another is posterior nasal cavity. And the common one is interior nasal cavity, because there is one area called Little's area. That area is very highly vascular, made by 5 arteries. Well, and this nose bleeding is more common in male than female. When there is nose bleeding in the interior nasal cavity, so it's clinically it's more obvious. And when there is bleeding in the posterior nasal cavity, as sometimes it's asymptomatic and sometimes it's present with nausea, hematemesis. Hematemesis is a medically term that means blood in the vomiting, and hemopoiesis, that means the blood in the sputum. Well, now I'm going to tell you the major causes behind this nose bleeding. Well, so number one is trauma and irritants like cigarette smoking, falling on the ground, dryness, environmental factor, winter, and when you are picking the nose. And in medication is aspirin and corticosteroid, and one more is chronic sinusitis. Well, if we talk about the systematic causes behind this nose bleeding, so the number one is high blood pressure. So those patients who is suffering with high blood pressure, they should monitor their blood pressure regularly. And hemophilia is the ability of the blood to clot, and in this condition is ability of your blood clotting time reduced. And so renal disease, liver disease, these are the major causes behind this nose bleeding. Well, now let's talk about the management. The very first management of this nose bleeding is you have to apply direct pressure with your 2 fingers in this soft area, not here, the soft area. Continuously apply for 5 to 20 minutes. Okay, this is a very well. One more thing, and don't forget tilting your head forward. When you're pinching here, you should tilt your head forward. What it means, it can prevent blood pooling backward to the posterior pharynx. It can avoid nausea and airways obstruction. And another one, you can use a petroleum jelly inside your nose. And another one is ephedrine. Ephedrine is alpha-1 adrenergic agonist. It can constrict your blood vessels to stop the nose bleeding. Well, it's a highly fast relief decongestant. Well, another one is you can use like a xylosine spray. And while when all these things not working, then you have to seek medical condition, and professional will use some gauze and they will do nasal. Well, so try your best, always use some moisturizer
to keep your nose not getting dry, you can use Vaseline. Well, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नाक से खून का बहना। इसको हम उर्दू में नक्सीर और इंग्लिश में मेडिकल में से एपिस्टेक्सिस कहते हैं। एपिस्टेक्सिस मीन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। वेल, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में सर्दियों में ज़्यादा कॉमन है और 50 साल के बाद बड़ों में। सर्दियों में जो हमारी नोज़ है ये ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हमारी नोज़ के अंदर छोटी छोटी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब हमारी नोज़ ड्राई होती है सो वी ट्राई टू पिकिंग द नोज़। सो जब हम नोज़ को पिकिंग करने की कोशिश करते हैं जो ब्लड वेसल्स है वो क्रैक हो जाती हैं। सो एंड यू एंड विद नोज़ ब्लीडिंग और फिर खून बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे नाक के ना 2 मेजर हिस्से हैं जहाँ से ये खून, तो जो मेजर 2 हिस्से हैं जहाँ से ब्लीडिंग होती है, एक का नाम इंटीरियर नेज़ल कैविटी है और दूसरा पोस्टीरियर नेज़ल कैविटी। सो जो कॉमन है जहाँ से ब्लीडिंग होती है वो है इंटीरियर नेज़ल कैविटी, क्योंकि यहाँ पे हाईली वास्कुलर आर्टरीज का नेटवर्क होता है जो कि ईजी टू क्रैक व्हेन यू आर पिकिंग योर नोज़। तो इसकी जो कॉमन वजह है, मेडिसिन में अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं या एस्प्रिन ले रहे हैं या फिर कोई ट्रामा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, साइनसाइटिस, क्रॉनिक साइनसाइटिस, और इसके बाद जो इरिटेंट्स है जैसे स्मोकिंग और स्मोक, और जो 50 साल के बाद अमूमन नोज़ ब्लीडिंग की वजह बनती हैं चीज़ें, वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनको रोज़ाना अपना ब्लड प्रेशर बाकायदे से चेक करना चाहिए। इसके बाद है गुर्दों की प्रॉब्लम, जिगर की प्रॉब्लम और प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। इसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट। इसकी अब मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने अगर देखा कि आपके सामने एक बच्चा, उसकी नक्सीर फूट गई है और आपने जल्दी से जो नोज़ का ये वाला सॉफ्ट हिस्सा ना, इसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है और यहाँ से ना 5 से 10 मिनट तक आपने पिंच करके रखना है। और जो बच्चे का हेड है ना वो आपने इस तरह आगे को झुका के रखना है ताकि जो ब्लड है वो हमारी पोस्टीरियर फेरिंक्स में ना जाए और वॉमिटिंग और एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप जो हैं वो कोई नेज़ल स्प्रे जैसे आरफ्रेन और ज़ाइनोसिन स्प्रे यूज़ कर सकते हैं या फिर पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें काम नहीं करी सो आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्टर जो है ना कुछ गॉज वगैरह लेके नेज़ल पैकिंग करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने नोज़ को